Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Latif and I am your instructor of the subject Principle of Animal Life 2, and today is the lecture number 12, uh, in which we'll talk about the linkage of X genes. In previous lecture I have explained about linkage and will further extend our topic to the linkage of X genes. The first evidence of the linkage of X genes is proposed by Morgan, and he said that the crossing over between X chromosome can occur. The work of Morgan showed that linked genes in a dihybrid may be present in one of two basic conformations. In one, the two dominant or wild-type alleles are present on the same homologue, and this arrangement is called cis. The other arrangement, he found that in the other way they are on different homologues in what is called a trans conformation. What is cis conformation? When the dominant alleles are present on the same homologue. One homologue has all the dominant alleles and the other homologue have the same recessive allele. And when they are present together, it is called a cis form. And the other one is called transform. What does transform mean? That a single homologue contains both of the allele. One is the dominant and the other one is recessive, and other one is the recessive and the dominant. So when the homologue have different alleles present together, it is called transconfirmation. And the first direct evidence that different genes are physically located on the same chromosome came in 1911 from the studies of Thomas Hunt Morgan. Before this, there is a we cannot know about chromosome, and we cannot know about genes, that certain genes control different traits. So it is the Thomas Hunt Morgan who basically studied that there are chromosomes and genes are present on the chromosomes. And this discovery makes a new investigation about the inheritance patterns of different traits which had been shown to follow an X-linked pattern of inheritance. The coming figures will illustrate about the experiment which involving three characters that Morgan studied three characters at one time. So it is a tri-hybrid cross. In the dihybrid cross, in which we study two characters at one time, and in tri-hybrid cross we study three characters at one time. And Morgan, the animal he chose is Drosophila, in which there is a parental combination of, or wild, two types of characters. One is called the wild type and the other is called the mutant. The wild type has gray body, red eyes and long wings. So these are the three characters which he has studied.
One is the gray body, red eye, and long wing. This is the parental one, and the other, the opposite characters or the mutant type of this is yellow bodied, white eyes, and miniature wings. It is basically a mutant. It is not the wild type. What does wild type means? Wild type means that the trait which is normally present in an individual is called wild type. Means वो characters जो normally किसी भी individual के अंदर आते हैं उसको हम wild type कहते हैं, और कुछ ऐसे character जो rarely किसी इंडिविजुअल्स के अंदर नमूदार हों तो उसको म्यूटेशन म्यूटेंट्स कहते हैं, या यानी हम ये समझते हैं कि किसी म्यूटेशन की वजह से ये चीज़ पैदा हुई। एज एक्सपेक्टेड, जो इन दोनों को जब उसने क्रॉस कराया, यानी एक जो इंडिविजुअल था उसकी क्या थे, जो वाइल्ड टाइप थी जिसके अंदर ग्रे बॉडी थी, रेड आइज थे और लॉन्ग विंग्स थे, उसको उसने क्रॉस कराया। जो वाइट येलो बॉडीज थी, वाइट आइज थी और मिनिएचर विंग्स थे, और जो इनमें क्रॉस हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वही होगा डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मली जो वाइल्ड टाइप हैं वो नॉर्मली ज़्यादा आते हैं, और यानी F1 के अंदर वही आएंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो एज एक्सपेक्टेड द phenotypes of the F1 generation were wild type females and males with yellow bodies, white eyes and miniature wings. Yani all the females are wild type and all the males were mutant, which is yellow bodies, white eyes and miniature, and this cannot be seen in the previous crosses. What happened to this, that all the females have wild type but the males have different characters. They are not wild type, they are actually the mutants, and the mutation remains only in males but not in female. And the linkage of these genes were revealed when the F1 flies were mated to each other and the F2 generation examined. And Morgan observed a much higher proportion of the combination of traits found in the parental generation. On the total flies he obtained, he observed 758 flies with grey bodies, red eyes and long wings, which is a wild type character, and 700 flies with yellow bodies, white eyes and miniature wings. This is also a parental combination. And the combination of grey body, red eyes and long wings. Grey body, red eyes and long wings are found in the males of the parental generation, and the combination of yellow body, white eyes and miniature was the same as the female of the parental generation. Morgan's explanation for this higher proportion of parental combinations was that all three genes are located on the X chromosome and therefore tend to transmit it together as a unit. However, to fully account for the data, Morgan needed to explain why a significant proportion of the F2 generation had a recombinant arrangement of alleles. Along with the two parental phenotypes, 5 other phenotype combinations appeared that were not found in the parental generation. So this is basically the parental generation, and this is the cross between female or male female with white eye, yellow body and miniature wings, and the male with red eye,
gray body and long wings. So F1 generation contains wild type females and yellow bodied white-eyed miniature wing males. The females are wild type and all the males are mutants, means they have yellow body, white eyes and miniature wings, but all the females are wild type. And in F2 generation, when these were crossed, the gray body, red eyes, long wings is the parental generation. Females, the total males, females, the total ratio is 758. Gray body, red eyes and miniature wing. This is a new combination. This is 208, 193 and 401. Gray body, white eyes and long wings. This is again a new combination. It is only one. Gray body, white eyes, miniature wings. This is again a new combination. You cannot find great body, white eyes and miniature wings all together. This is 5 in females, 11 males, total is 60. Then yellow body, red eyes and long wings. You will see that yellow associated with white and miniature wing, but in this cross, yellow, red and long wings, they are come together, and females are 7, males are 5, only 12. 12 total population found. Yellow body, white eyes and long wings. This is again a new combination. 178, 139 and 317 and yellow body, white eyes, miniature wing. This is again the second parental forms, which is 700. So the total one is this is the parental form 1 and this is the parental form 2. They are total of 758 and 700. But the gray body, red eyes and miniature wing, this is a new combination. These are in very high portion and the other combinations are very low portion. What is the possible explanation of this? We'll explain further in, but on this you will find that the genes for gray body, red eyes and miniature wings, they are far from one another, and that's why a new combination can be much higher proportion. ठीक है, और बाकी जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है. What is the interpretation of Morgan experiment? How did Morgan explain these data? He considered the studies conducted in 1909 of the Belgian cytologist Franz Alphonse Janssens, who observed chiasmata under the microscope and proposed that crossing over involves a physical exchange between homologous chromosomes with inconsistent reciprocal crosses. What is reciprocal cross? कि हम बैक क्रॉस कर सकते हैं इसको अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए. He hypothesized that the genes for body color, eye color and wing length are located on the same chromosome, which is called the X chromosome, and therefore the alleles for all three characters are most likely to be inherited together. Due to crossing over, Morgan also proposed that in the females, the homologous X chromosome can exchange pieces of chromosomes and create a new combination, rearrangement of alleles and traits in the F2 generation. To
appreciate Morgan's proposal, let's simplify his data and consider only two of the three genes, those that affect body color and eye color. If we use the data from figure, the following results were obtained. Gray body and red eye, this is totally 1159, and yellow body and white eyes, these are 1017. Gray body and white eyes, these are only 17, and yellow body and red eyes, these are only 12. This is recombination because these two combinations are never found in the parents. So that's why they are called non-combination, new combinations or recombination. The likelihood of crossing over between two genes depend on the distance between them. As I already explained that when there is a crossing over, the genes must be present away from each other. When the alleles are away from each other, there is a possibility of crossing over, and when they are close enough to each other, there is far less chances of crossing over. So Morgan also noticed a quantitative difference between the number of recombinant offspring when comparing body color and eye color versus eye color and विंग लेंथ. यानी दो अब उसने करेक्टर देख लिए, एक उसको बॉडी कलर देख रहा है, आई कलर देख रहा है, यानी ग्रे और येलो इसको देख रहा है, और आई कलर रेड और वाइट इसको देख रहा है. दूसरे में वो देख रहा है आई कलर और विंग लेंथ, यानी एक में सिर्फ उसने बॉडी कलर और आई कलर को देख रहा है और दूसरे में आई कलर और विंग लेंथ को देख रहा है. यानी आई कलर वही रेड और वाइट है, और विंग लेंथ यानी वो लॉन्ग भी हो सकते हैं और मिनिएचर भी हो सकते हैं. तो दिस क्वांटिटेटिव डिफरेंस इज रिवील्ड बाय रीऑर्गेनाइजिंग द डाटा बाय पेयर ऑफ जीन्स. अब इसमें देखें आपने सिर्फ उसने पहले बॉडी कलर और आई कलर को देखा है, तो ग्रे बॉडी रेड आइज और येलो बॉडी वाइट आइज, और इनके अंदर यानी ये बेसिकली दो जीन्स हैं जो लिंक्ड हैं, इसके आप यानी समझ आ रहे हैं आप. तो इस वजह से जो न्यू कॉम्बिनेशन है उनकी तादाद बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत लेस चांसेस हैं कि वो आपस में क्रॉस ओवर करेंगे. और इसी तरीके से जो आई कलर है और विंग है जो दूसरा करेक्टर है वो भी देख लें, ये भी दोनों लिंक्ड है, जिसकी वजह ये दोनों लिंक्ड नहीं है, ये क्या है एक दूसरे से फार अपार्ट है. देखें रेड आइज और लॉन्ग विंग्स, अगर इसको हम सिर्फ देखें तो इसके अंदर ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी है दोनों, और ये न्यू कॉम्बिनेशन इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 401 और 318. इसका मतलब क्या है कि जो आई कलर है और लॉन्ग विंग्स हैं ये बेसिकली एक दूसरे से फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इन दो ट्रेड्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर इजीली हो सकती है. और ये क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो ये वाले कैरेक्टर्स हैं यानी रेड आईज मिनिएचर विंग्स हैं और वाइट आई लॉन्ग विंग्स हैं, विच इज़ अ न्यू कॉम्बिनेशन. दोनों न्यू कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ये एक पेरेंटल जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, ये दूसरे पेरेंटल जनरेशन का कॉम्बिनेशन है जो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन इनका जो रिकम्बिनेशन है वो भी ज़्यादा है, दोनों के अंदर ज़्यादा है. और इस बात को ये साबित करता है कि जो आई कलर है और विंग लेंथ है बेसिकली दे आर नॉट लिंक्ड, बट the body color and the eye color they are linked. और इसकी वजह से यहाँ ये देखेंगे ये दो जो एलील्स हैं
ये लिंकेज है, तो इसलिए इन दोनों के अंदर जो न्यू कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है आई कलर का और विंग लेंथ का, ये दो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हैं, तो इसलिए इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लिंक्ड नहीं है, इस वजह से ये पेरेंट जो न्यू कॉम्बिनेशन आए हैं वो ज़्यादा। So the recombinant offspring involving only eye color and wing length were fairly common. In sharp contrast, recombinant offspring for body color and eye color were quite rare, which is 17 plus 12. How did Morgan explained these data? He proposed that the likelihood of crossing over depends on the distance between the two genes. If two genes are far apart from each other, crossing over is more likely to occur between them than between two genes that are close together. And the figure illustrates the possible events that occurred in the F1 female flies of Morgan experiment. One of the X chromosomes carried all three dominant alleles, the other had all three recessive alleles. If no crossing over occurred, the non-recombinant phenotypes were produced in the F2 offspring. Alternately, a crossover sometimes occurs between the eye color gene and the wing length gene to produce recombinant offspring with gray bodies, red eyes and miniature wings, or yellow bodies, white eyes and long wings. So according to Morgan's proposal, such an event is fairly likely because these two genes are far apart from each other on the X chromosome. In contrast, he proposed that the body color and eye color genes are very close to each other. हमने अपने जब रिजल्ट को बिल्कुल क्लोजली पीछे मॉनिटर किया तो हमने देखा कि जो आई कलर है, बॉडी कलर है और आई कलर है, ये बहुत एक दूसरे क्लोज हैं और दैट्स वाई उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर जो है वो अनलाइकली इवेंट है। लेकिन अगर ओकेजनली ये अकर हो भी जाए तो वो ऑफस्प्रिंग विद ग्रे बॉडीज, वाइट आइज एंड मिनिएचर विंग्स और विद येलो बॉडीज, रेड आइज एंड लॉन्ग विंग्स, ये जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशन के अंदर आए थे वो पॉसिबल है। एंड फाइनली इट वाज आल्सो पॉसिबल फॉर टू होमोलोगस क्रोमोसोम टू क्रॉस ओवर ट्वाइस। ये बहुत ही रेयर होता है लेकिन इट इज पॉसिबल। This double crossover is very unlikely among the 2205 and 2205 offspring Morgan examined. He found only one fly with a gray body, white eyes and long wings that could be explained by this phenomenon. अब ये F1 जनरेशन है जिसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं है। इन दिस रीजन इज वेरी कॉमन, नो क्रॉसिंग ओवर इन दिस रीजन, वेरी कॉमन। तो ये क्या है जिसके अंदर ग्रे बॉडी, रेड आइज और लॉन्ग विंग्स हैं और येलो बॉडी, वाइट आइज और मिनिएचर विंग। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन है उनके अंदर ये तमाम दो ऑफस्प्रिंग मौजूद होंगे और ये दोनों पेरेंटल हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर हो ही नहीं है। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो कोई न्यू कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। एक और बात इससे ये भी एक्सप्लेन होती है कि जो वाई क्रोमोसोम है बेसिकली इनर्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो वाई के ऊपर कोई भी अलील मौजूद नहीं है। तो हम जो देखते थे कि जो म्यूटेंट
जो करेक्टरिस्टिक है वो हमेशा मेल के अंदर पाया जाता है। वो मेल के अंदर इसलिए आता था क्योंकि अगर सिंगल कॉपी भी होगी, वो अगर रिसेसिव होगी तो डेफिनेटली वो रिसेसिव करेक्टर शो करेगी, क्योंकि उसके अपोजिट क्रोमोसोम है जो कि वाई क्रोमोसोम है मेल के अंदर, उसके पास अदर कोई अलील मौजूद नहीं है। तो जो मौजूद नहीं है इसलिए सिंगल अलील ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम वाई को इनर्ट क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो वाई के ऊपर मौजूद नहीं होता। अब जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है आई कलर और विल लेंथ के अंदर, ठीक है, विच इज फेयरली कॉमन, वहाँ आप देख लें तो F2 जनरेशन के अंदर ग्रे बॉडीज, रेड आइज और मिनिएचर विंग, ठीक है, दिस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन। और येलो बॉडी, वाइट आइज एंड लॉन्ग विंग्स, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। ये आपको ज़्यादा तादाद में मिलेंगे जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है। जहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं है आपको वही ग्रे बॉडी, रेड आइज और लॉन्ग विंग जो कि पेरेंटल जनरेशन, और येलो बॉडी, वाइट आइज और मिनिएचर विंग, ये भी पेरेंटल जनरेशन है, ये मिल रहा है। लेकिन जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहाँ आपको ये दो नए कैरेक्टर, ग्रे बॉडी, रेड आई और मिनिएचर विंग्स, ठीक है जी। नॉर्मली ग्रे बॉडी, रेड आइज के साथ लॉन्ग विंग्स होता है, लेकिन आई कलर और जो विंग साइज है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इसलिए ये जो है हमें न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं इस तरह, येलो बॉडी, वाइट आइज एंड लॉन्ग विंग्स। So crossing over is more likely to occur between two genes that are relatively far apart than for two genes that are very close together. A double crossover is particularly uncommon. ठीक है जी। इसी तरीके से ये देखें, जब बॉडी कलर और आई कलर की जीन के अंदर जो क्रॉस ओवर होती है, विच इज़ वेरी अनकॉमन, कॉमन नहीं है, अगर हो तो ठीक है। ये देखें जनाब, ये हमारी जो ग्रे बॉडी है, ये हमारा क्योंकि ग्रे बॉडी को हमने वाई प्लस से देखा था, विंग जो लॉन्ग विंग है इसको डब्ल्यू प्लस से देखा था, और जो रेड है उसको हमने एम प्लस से देखा था, यानी इसे डिजिग्नेट किया था। और इसके जो रिसेसिव हैं, मतलब जो येलो है उसको हमने डिजिग्नेट किया है वाई से, और ये कलर से भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और जो विंग लेंथ है वो लॉन्ग को हमने डब्ल्यू प्लस, और जो मिनिएचर है उसको डब्ल्यू से। इसी तरीके से आई कलर को हमने एम प्लस फॉर रेड और एम फॉर वाइट, और ये रिसेसिव के साथ इसका क्रॉस किया गया है। इसके अंदर बेसिकली ये हेट्रोजाइगस है, इसके अंदर ग्रे बॉडी है और रेड आइज है और लॉन्ग विंग्स है, जिसको हमने क्रॉस कराया है विथ रिसेसिव कैरेक्टर्स, जो कि क्या है, येलो बॉडी, मिनिएचर विंग्स एंड वाइट आई। और जो F2 ऑफस्प्रिंग्स हैं उसके अंदर क्या है, ग्रे बॉडी है, वाइट आइज है, मिनिएचर विंग्स हैं, जो टोटल जो है ओनली 16 है, और येलो बॉडी, रेड आइज एंड लॉन्ग विंग्स ओनली 12 है। क्योंकि बेसिकली आपको ये बताया गया है कि ये दोनों जो है कैरेक्टर्स ये आपस में बहुत ही फेयरली क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही थोड़े मिकदार के अंदर आपको सिर्फ ओनली 16 और 12 है, ठीक है जी। इसी तरीके से जहाँ डबल क्रॉसओवर अगर होता है जो बहुत ही अनकॉमन है, तो फिर आपको ग्रे बॉडी, वाइट आइज और लॉन्ग विंग जो सिर्फ एक है वो आपको मिल सकता है। और दूसरा जो अगर डबल क्रॉसिंग इसके अंदर होती है तो फिर येलो बॉडी, रेड आइज और मिनिएचर विंग्स हो सकता है, लेकिन जो कोई भी सिंगल इंडिविजुअल भी इसका
नहीं मिला, लेकिन इसका एक सिंगल इंडिविजुअल उसको टोटल में मिला है, विच इज ड्यू टू डबल क्रॉस ओवर। वो क्या था? ग्रे बॉडी, वाइट आईज एंड लॉन्ग विंग्स, दिस विच इज फेयरली अनकॉमन। अब सेक्स लिंक्ड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? When white-eyed males are crossed with red-eyed females, इसको थोड़ा सा जिक्र मैंने पिछली स्लाइड के अंदर किया है कि all the F1 progeny have red eyes, showing the alleles for white is recessive, and crossing these red eyes F1 males and females produce a 3:1 F2 ratio of red-eyed to white-eyed flies, but all the white-eyed flies are males. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो F2 के अंदर वही आया कि जिसमें 3 जो थे वो वाइल्ड टाइप भी थे, रेड आई थे, लेकिन जो एक था वो वाइट आई था, लेकिन डिफरेंस सा ये था कि जो वाइट आई है वो सिर्फ मेल है, फीमेल नहीं आ रहा। रेसिप्रोकल क्रॉस या टेस्ट क्रॉस क्या कहते हैं इसको? टेस्ट क्रॉस कैसे हम कर सकते हैं कि हम जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उसको हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, इसको चेक करने के लिए। ये हमें डिफरेंट रिजल्ट देता है। रेसिप्रोकल क्रॉस बिटवीन वाइट आइड फीमेल एंड अ रेड आई मेल। अब क्या है कि वाइट आई फीमेल्स और रेड आई मेल के सामने जब हमने कराया तो इन F1 all the females are red eyed but all the males are white eyed. In this case, every female inherited the dominant W allele from the father's X chromosome, whereas every male inherited a single X chromosome from the mother bearing the recessive W allele. So when a female inherited the dominant allele which have red color, because red color को हमने dominant को W से जाहिर किया और इसके जो recessive है उसको हमने small w से जाहिर किया। तो अगर फीमेल्स के अंदर अपने फादर से वो ले रहे हैं, वो एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर डोमिनेटली ले रहे हैं, तो जितनी भी फीमेल आएंगी वो क्या होंगी? रेड आइज होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उनके अंदर सिंगल अलील भी डोमिनेंट का अगर आ गया है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन केस रिवर्स है, क्योंकि फीमेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम आता है। अगर वो रिसेसिव आ गया, यानी वो ऐसी मदर से आया जो जिसके अंदर रिसेसिव था, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वाई क्रोमोसोम है इसका वो इनर्ट है, यानी उसके ऊपर अदर जो पार्टनर है अलेल का वो नहीं मौजूद, तो वो सिंगल ही अगर आ गया तो वो अपने आप को शो करेगा। दैट्स वाई कि जितने भी मेल आते हैं उनके अंदर जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो शो हो रहा है, और ये रिसेसिव कैरेक्टर का शो होना ये बात की दलील है कि जो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड है, और जो कैरेक्टर एस क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड है उनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो इनर्ट हो रहा है। इनर्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स मौजूद ही नहीं है उसके अलावा। तो अगर वो डोमिनेंट आ गया उसके अंदर तो वो डोमिनेंट अपने आप को डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा, लेकिन अगर रिसेसिव भी आ गया तो वो रिसेसिव ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। The F2 consists of half red-eyed and half white-eyed flies of both sexes. Hence, in sex linkage, we see examples not only of different ratios in different sexes, but also of difference between reciprocal cross. ये देखें जनाब कि ये रेड फीमेल्स हैं, यानी रेड आइट, ठीक है, दोनों के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों के पास। यहाँ इस फिगर से बेसिकली आपको ज़्यादा समझ आएगी, बनस्पत वो जो पिछले वाला आपको स्लाइड है वो आपको इतना ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, लेकिन ये आपको फिगर एक्सप्लेन बेहतर कर देगी। ये देखें जनाब, दोनों
जो अलील हैं उनके ऊपर रेड आई का जो अलील है वो मौजूद है, दोनों डोमिनेंट हैं और इसलिए ये फीमेल की रेड आई है। और ये वाइट आई है। वाइट आई क्या है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील है वो रिसेसिव है और इसके लिए सिंपल जो हमने डोमिनेंट उसको W प्लस से और रिसेसिव उसको सिर्फ W से रिप्रेजेंट किया। तो और Y के ऊपर कोई अलील मौजूद नहीं है जो इसको कॉन्टैक्ट यानी इसको काउंटर इफेक्ट कर सके। दैट्स वाई ये वाइट मेल है। और जब इनकी क्रॉस की जाती है, अब ये देखें, ये दो टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एक जिसके अंदर वाइट आई वाला अलील मौजूद है और एक वाई क्रोमोसोम इसको कोई अलील मौजूद नहीं है। लेकिन फीमेल जो है वो एक तरह के ही, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है तो एक तरह के ही वो एग प्रोड्यूस करेंगे जो सारे रेड आइड है। अब ये जब इससे W यानी एक्स क्रोमोसोम के साथ ये कंबाइन करेगा तो ये फीमेल जो है वो सारी क्या होंगी, रेड होंगी। डेफिनेटली हेट्रोजाइगस हैं लेकिन ये रेड है क्योंकि इसके अंदर जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और इसी तरीके से ये जब ये एग जो है जो डोमिनेंट एलील जिसके ऊपर मौजूद है ये वाई के साथ जब क्रॉस करेगा तो जितने भी मेल आएंगे वो भी सारे रेड आई होंगे, क्योंकि ऐसी फीमेल जिसके पास दोनों रेड आई वाले एलील मौजूद हैं वो सिंगल भी अपने आप को यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वाई के पास कोई अल्टरनेट एलील मौजूद नहीं है, तो सारे जो मेल आएंगे वो रेड आई। अब F2 के अंदर ये वाला जो मेल है जब ये क्रॉस करेगा विद हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी ये जो इनकी जो हमारे पास F1 के इंडिविजुअल हैं, जब इनको हम आपस में क्रॉस करते हैं, ये देखें क्योंकि ये वाला एक हमारे पास ये है और ये वाले हमारे पास ये दो कॉम्बिनेशन आया ना, अब इनको हमने क्या करना है, आपस में क्रॉस करना है। ये देखें हमने आपस में क्रॉस किया, इसकी ये दो गैमेट बने हैं, ये देखें, एक इनके पास W प्लस यानी रेड आइड और दूसरा Y, और इसके पास एक के पास रेड आई, और क्योंकि हाफ डेफिनेटली आपको पता है हाफ जब आप यानी गैमेट्स बनते हैं तो जो दोनों अलील हैं वो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, हाफ जो है वो रेड आइड वाले होंगे, हाफ जो है वो वाइट आइड वाले होंगे। अब ये डेफिनेटली उससे इससे मिलेगा तो ये यानी वाइट से मिलेगा तो रेड आइड, ये रेड बाई आई वाला वाई से मिलेगा तो ये रेड आइड मेल आ जाएगा। इस तरह वाइट आई वाला जो गैमिट है ये जब रेड आई वाले गैमेट्स मेल गैमेट से मिलेगा तो ये रेड आइड फीमेल होगा। लेकिन ये वाला जब वाइट आई गैमेट है जो फीमेल का, ये अगर वाई के साथ कंबाइन कर जाता है, ये देखें, तो फिर ये क्या आएगा, वाइट आई मेल। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि वाई के ऊपर कोई अलील मौजूद नहीं है। दैट्स वाई ये इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कि ये जो आई कलर का जो अलील है ये एक्स क्रोमोसोम के पास मौजूद है। तो जो एक्स क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस पैटर्न है, क्योंकि आपको पता है कि मेल के अंदर सिंगल एक्स होता है और फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है। तो फीमेल उस वक्त अपने आप को, यानी उसके पास दोनों सेम हो तब भी वो अपने एक्सप्रेस करेगी, और अगर सिंगल भी होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। अगर वाइट आई फीमेल उस वक्त आएगी जब दोनों वाइट आइट के जो एलील्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी सूरत में जो फीमेल है वो वाइट आइट हो सकती है। अगर सिंगल अलील वो वाइट आई का भी उसके पास मौजूद हो तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि रेड आइट वाला अलील जो है वो डोमिनेंट है ओवर वाइट आई, ठीक है। अब जो सेकंड क्रॉस है जिसके अंदर वही है वाइट आइट फीमेल्स,
उसको हम क्रॉस करते हैं रेड आइड मेल के साथ। ठीक है, डेफिनेटली अब आपको पता है कि फीमेल के एक ही तरह के, तो जितने भी अब नॉर्मल रेड आइड मेल है उसमें जितने भी एक्स क्रोमोसोम आएंगे वो सारे रेड के साथ होंगे, और फीमेल तो है सारी वाइट आई हैं, तो उसके पास जितने भी लील हैं सारे वाइट वाले हैं। तो जितनी भी फीमेल आ रही हैं वो सारी रेड आइड है, बेशक वो हेट्रोजाइगस है लेकिन वो रेड आइड है। लेकिन इस केस के अंदर अगर वाइट आइड फीमेल जो है वो रेड आइड मेल के साथ अगर क्रॉस करेगी तो इस केस के अंदर जितने भी मेल आएंगे वो सारे वाइट आइड होंगे। क्यों वाइट आइड होंगे? क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट एलील ऑन वाई क्रोमोसोम। अब इन F2 को जब हम यानी जो आपस के जो इंडिविजुअल आए हैं इनको हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो ये देखें ये वाले दो गैमेट ये वाले प्रोड्यूस करेंगे और इससे ये वाले दो गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, वन इज रेड वन विद वाइट, और जो मेल है वो वन विद वाइट एंड द अदर इज वाई क्रोमोसोम। इस कंडीशन के अंदर 25% जो है वो रेड फीमेल्स हैं, 25% जो है वो वाइट फीमेल है, और 25% इसमें जो है वो वाइट फीमेल है, और 25% जो है वो वाइट मेल है। तो ऐसी क्रॉस जिसके अंदर हेट्रोजाइगस फीमेल क्रॉस विद वाइट आइड मेल, उसके अंदर जो चारों कॉम्बिनेशंस हैं यानी रेड फीमेल, रेड मेल, रेड फीमेल, वाइट फीमेल एंड वाइट मेल, वो सारे